Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Yeah, we shall wait for a few minutes. Wait. Good afternoon, everyone. Shall we begin? Am I audible? सर Yes, आवाज sir. नहीं आ रही। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. हाँ, आप आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। बहुत सर बहुत स्लो आ रही है। सर क्लियर नहीं आ रही है। जैसी आ रही है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप सुन पा रहे हैं? आप हेडफोन लगा के सुनिए तो आराम से सुनेंगे। ओके, शैल वी बिगिन? शुरू करें कोर्स? हेलो, ये सर शुरू करिए। हाँ जी सर, स्टार्ट करिए। so I'll share my screen. Please let me know if it is visible to everyone. See my screen, or can you see my screen? Is it visible? आप लोग मुझे बताइए क्या? हाँ sir, no, sir, yes, sir.
पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सर अब हो रही है। हो रही है ना, धीरे धीरे होगा, आराम से, ठीक है। नेटवर्क स्लो होगा आपका तो आराम से आएगा। ओके, सो माय नेम इज गोपाल दत्त. आई एम your instructor for linear algebra course. So I'll begin with some history. Okay, why the name linear algebra, and who first gave the definition that we see these days, nowadays. Okay. So let's begin this course. So we call it linear. Let me write the name of your course. It's linear algebra. Modern linear algebra is based on the theory of vector spaces over a field. So I'll assume you know what is a field. You know what a field is. I'll assume this. Okay. We will be discussing things like vector spaces, subspaces, and all these things in this course. So as I said, modern linear algebra is based on the theory of vector spaces over a field, or more generally on the theory of modules over a ring. So for ring and modules, you have a separate course. It is called Advanced Abstract Algebra. I think it's MAM 203 course. Okay, you will learn about modules and rings there. So this modern linear algebra thing, it was formulated around 1930s. Okay, it's not so it's 90 years back. Correct. So the guy who first formulated vector spaces, he didn't call it, he didn't name it vector space, but he defined vector spaces. His name was Piano, and he defined it in 1888. Okay. So have you heard about Piano before? Hello? सर आवाज Yes, नहीं आ sir. रही है सर, बिल्कुल Have you heard about बहुत Piano? कट रही है आवाज। No, sir. So have you heard about Piano's axiom? Piano's axioms or Piano's postulate for natural numbers? I think you must have seen this kind of thing in your algebra course, or in analysis course. So when you first learn about natural numbers, so Piano's axioms give the notion of natural numbers. Okay. So this Piano is the same Piano who gave no natural numbers, who axiomatized natural numbers. So in 1888, Piano gave a definition of vector spaces in a geometric context, not in algebraic context. Okay. So what he did, he defined a linear system, and he defined some axioms on a set of points. And then for 30 years, this definition was not that popular. Around 1930, Han and Banach made it popular, and they... Hello? सर आवाज नहीं आ रही है सर, बहुत कट कट के आवाज आ रही है, बहुत कम सुनाई पड़ रहा है। तो
मीटिंग से हट सकते हैं क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? सर यस सर हेलो? यस Sir. सर यस सर। तो यस सर किसी को नहीं सुनाई दे रहा? और ये बीच बीच में बफरिंग हो रही है सर, बीच बीच में आवाज कट तो जा रही है। तो इसमें आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप अपना नेटवर्क सर ब्रॉडबैंड Sir, लगवाए same हुए हैं सर, here. 25 Mbps की स्पीड आ रही है। अच्छा नेटवर्क। सर इधर भी यही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं मिलते। आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में पूछिए फिर, और तो क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। तो हाँ सर, ये ठीक है सर। Sir, WhatsApp is the best option. यस सर। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछिए तो मैं रिप्लाई करता हूँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। Yes, sir. Here everyone is facing problem. So I can't do anything, na? If so, so whoever is facing this problem, they can left the meeting. Okay. So you can ask your question in WhatsApp. I'll reply it whenever I get time. So whoever is okay with this, they can remain here. I'll take this class. Okay. Any problem now? No, sir. नो सर। Okay. Who is fine with this? They can remain here. We will have a class. Others can go. Okay, they can remove themselves. So I'll wait for 1 minute. Please let me know, shall I begin or not? Okay. Shall I begin now? Yes, sir. Are you okay with this voice? So you can Yes, hear sir. me? Okay. Am I Yes, audible sir. properly? Yes, sir. Properly. Okay. So its historical roots of linear algebra lies in various branches of mathematics, such as algebra. Okay, let me write roots of linear algebra. These lies in algebra, in analysis, in geometry, and many more in differential equation as well. So in algebra, so its root includes in linear equations. So we will be talking about linear equations today. In bilinear forms, so we will see if we get some time, we will talk about bilinear forms. Matrices, we will see. Yeah, you all have seen what matrices are, and there are others. So I'm writing etc. So in analysis, these are, say, linear differential equations, and infinite dimensional spaces of various sorts. Spaces of various sorts. In geometry,
These are directed line segments. Affine geometry. We talk about what is affine geometry. And projective geometry. So we will not touch this projective geometry, but it is very interesting thing. One should learn about projective geometry. Okay, so these were the roots of linear algebra. So let's begin with linear equations. So we will be talking about system of linear equations. Okay, before moving ahead, let me ask you one question. Have you seen system of linear equation in your undergraduate classes? Have you seen this before? Hello? Please let me know. Yes, sir. आपने ये देखा है ना पहले सिस्टम ऑफ लीनियर I have इक्वेशन? studied. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो Tricks में, आप sir. लोगों को ये सॉल्व करना आता होगा? Yes, sir. आपने ये 11th Yes, क्लास sir. से सीखा है, याद करो, है ना? 11th क्लास में पहली बार देखा था, फिर बीएससी में भी देखा होगा, सर बीएससी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में सर. बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखा था ना? बहुत Yes, sir. बढ़िया. मैट्रिक्स. तो आपने मेरा काम थोड़ा सा इजी कर दिया, आसान कर दिया. सो ये वाला, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं, आपका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और हमारे पास टाइम बहुत कम है ना? यस सर. तो मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं. क्या ये ठीक रहेगा? यस सर. सर ये तो भी नॉर्मल है सर, आगे का थोड़ा सर देख लीजिएगा. हाँ, जो 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 मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा जो आप लोग जानते हैं. मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? लेकिन चीजें मैं स्किप करूंगा. एंड आई थिंक यू must have seen the definition of a vector space over a field. Have you seen a definition of vector space? Have you seen the definition of a vector space? कोई बताओ, देखा कि पहले आपने पढ़ा है वेक्टर स्पेस? Yes, sir. यस सर. ओके, Yes, sir. बहुत. तो आपने मेरा काम हल्का सा इजी कर दिया. मैं एक काम करूंगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक राइटअप लिख के आप लोगों को भेजूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं. और आज की क्लास में हम देखते हैं, जैसे आपने वेक्टर स्पेसेस पहले पढ़ा है, तो ये मेरे लिए इजी होगा कि आपको और उसमें कुछ ऐड कर पाऊँ. जो आपको पहले से मालूम है उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, ठीक है? शायद आपने किसी और तरीके से पढ़ा होगा और हम लोग कुछ और तरीके से पढ़ते हैं. सो लेट्स डू दैट. So we start from a linear equation. What is a linear equation? So we will start from basic, from a linear equation in two variable. So a linear equation in two variable is given by this, where A, B and C, they belongs to R, or A, B and C, or any field, okay? And X and Y are two variables. You know this. Solving a linear equation means
finding a pair x comma y in R2, okay, or finding x and y in R such that ax plus by equal to c. So if we find x and y such that ax plus by equal to c, then we say x and y are, so this pair xy is a solution of this equation, correct? Okay, so I request you please participate in conversation, okay? So when I say Okay, sir. okay, so otherwise it will be very boring for me and you as well. You may interrupt anytime, you may ask anything related to this, okay? Okay, sir. Okay, so let's move ahead. As I said, solving a linear equation of this sort means finding x and y in R such that they satisfy. Okay, or in other words, we say find a vector x comma y in R2 such that this satisfy, means ax plus by equal to c. Okay, good. So, what does geometrically it look like? Okay, geometrically, this equation represents a line in R2. So you all know what is R2. Is anyone there who does not know? कोई ऐसा है जिसे R2 का मीनिंग नहीं मालूम? हेलो? ओके, आप लोग शर्माइएगा मत, जिसको नहीं मालूम है वो मुझे बोल दीजिए नहीं मालूम, क्योंकि यस सर शर्माते बिल्कुल नहीं है। हाँ, शर्माइए नहीं, अगर आपको नहीं मालूम तो बोलिए कि मुझे नहीं पता, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप नहीं बोलेंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि आपको नहीं पता, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ठीक, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको फिर बाद में ना। ओके, Yes, sir. so a line is, so it will look like something like this. If you know A, B, C, if you know what A, B, C are, please mute yourself. जब आप बोलेंगे तभी आप अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट रखिए खुद को। Okay, if you know A, B and C, you may plot this graph. Okay, so it looks like this. Here you know graph of ax plus by equal to c is a line whose slope is, please tell me the slope. What will be the slope? minus by a. Slope is minus a by B. minus a by b, correct? And it passes through a point, so it passes through many points. There are infinitely many points, but let me write it. When y is 0, it will be c by a. Okay, passes through c by a, comma 0, correct? Any doubt? No, sir. Excuse me, Okay. sir. हाँ, Sir, I have one doubt. Excuse me, sir. हाँ, ये जो आपने बोलो लाइन बोलो। का ग्राफ खींचा है सर, ये जो लाइन का ग्राफ खींचा गया है सर, ये इस तरह से रहेगी सर? नहीं, ये ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट से होके जाएगा? नहीं, ये डिपेंड करता है ए और बी, ए बी सी कैसा है, ठीक है? अगर एक्सक्यूज मी सर, अगर इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे
अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हाँ। करते हैं तो x अपॉन आ जाएगा हमारा c बाई a प्लस y अपॉन c बाई b, इस टाइप का इक्वल्स टू 1। हाँ। तो यहाँ से पॉइंट मिलते हैं x एक्सिस पर c बाई a और c बाई a कॉमा 0, और y एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा c बाई b 0 कॉमा c बाई b। सर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। आपको किसने बोला कि ये पॉजिटिव है? जिस तरीके से खींचा गया सर। आपको सर किसने बोला कि ये पॉजिटिव बुक है। है? ओके, सपोज हेलो हेलो -1, suppose c by a is -1, then who Yes, says that sir. c by a, who says that c by a is positive? I didn't say c by a Sorry, is sir. positive. Assume c by a is -1. A, B, C may, that's what I said. If you know A, B and C, then you will draw an exact line, okay, whatever that line be. So this is a rough sketch of that line. Okay, sir. So Okay. if C by A is -1, then it will look like this. If C by A is -1 and C by B equal to 1, then this is the line, correct? Yes, So sir. that means Yes, it sir. depends on the nature of points. That means it depends on A, B and C, Okay, so correct? Okay. So Sir, I this was think we can. Hello, bolo. hello. Sir, I think we Please can speak. also select the passing point. Is my voice audible? You can also. Yes, you are audible. Please Hello. go ahead. बोलो भैया बोलो. Sir, कौन बोल रहे हैं? if क्या? CR x at 0, then get gamma c1 as a passing point. There is a chat box. You can write there. Okay, Hello? sir. Yes, sir. Please write your query there in chat box. Okay, sir. I am writing. Okay. Any doubt here to any other? किसी और को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? Hello. Okay. If there is no problem, then I'll move ahead. So he has not yet written anything. Okay. So this was the case for a linear equation. Now let's take a system of linear equations. Okay. So how does the system of linear equation look like? So let me write what a system. If x equal to 0, then passing point is 0, c by b. Yes, that's correct. So here I have already written that. Ashish Pratap. Yes, sir. Ashish. So I have Yes, sir. already mentioned this. I have already mentioned it. See this point. This is 0, c by b. Yes, sir. Okay. You are absolutely correct. Okay. So Yes, sir. how does a It's system okay. of linear equation look like? So a system look like this: a12 x2. So we will take a system of equation in n variable.
So these are n variable x1, x2, xn, correct? A21 x1, A22 x2, so let's take m equation. So what we will get is am1 x1, am2 x2, amn xn equal to bm, correct? Here is aij and bj, bi, these are all real numbers, correct? So if we have, if b, if bi is, if b1 equal to b2 equal to bm equal to 0, then the system is called a homogeneous system. Homogeneous system or homogeneous linear system. Now, what does it mean by solving a system of linear equations? Okay, let's see this. So, solving a system of linear equation. Solving a system of linear equation means finding x1, x2 and xn are such that they satisfy this system star, such that x1, x2, xn satisfies the system star. Okay. So in other words, what in other words we can say that find x1, x2, xn in Rn such that this satisfies star. Okay, correct? Any doubt? Yes. No, Okay, sir. any doubt? You said yes, sir. Means there is a doubt? Is there a doubt? No, sir. No, sir. Oh, no. Okay. Okay, so we have seen a single linear equation. Let's take a system of two linear equations in two variables. Okay. So let's begin with an example. So take 2x plus y equal to 3, x minus 9y equal to, say, minus 8. So I am taking this because I have mentioned this in notes and I know its solution. So that's why I am taking this. Okay? You may take any other and then you have to solve that equation, that system. Okay, see here, this equation has a solution, namely xy is 1 comma 1, and this is the only solution of this system. xy is the only solution of above system, this system. So geometrically, what does it look like? Say, since
we are in R2, we have only two variables, so this means we are in R2. So you can make R2 like this. So first equation, it will represent, so this is a this and 3 by 2. So the first line will go like this. Okay. So say this is 0, 3 and this is 3 by 2, 0. This is first equation, first line. And second one is, okay, it's -8 and so -8 is somewhere here. And then 8 by 9. 8 by 9 is almost 1 somewhere here. So this is the line for x minus 9y equal to -8. And this point will be the solution. This is nothing but 1, 1. So geometrically, solution is given by precisely the point where these two lines intersect. Correct? Any question here? No, sir. No, sir. Okay, you all know these things. You have seen this in your, I think, 8th class or 9th class. Yeah? Yes, sir. Okay. So we have seen a system where we have only one solution. Let's see another system. Again, I am taking example from notes. 2x plus y equal to 3 and 2x plus y equal to 7. Okay. So if we solve this system, we find that there is no solution. And why so? Because let's represent geometrically. So 2x plus y equal to 3 means y equal to 3, okay, and x equal to 3 by 2. So this something like, okay, I'll make it here and some here. अच्छा नहीं बन रहा ये. इधर से बनाते हैं. सर इसकी रैंक फाइंड करके बता सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है. अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पहुंचे नहीं, तो आप ठीक है, आप मैं इसीलिए मैंने आपको पहले पूछा कि आप लोगों ने ये पढ़ा है ना? तो क्योंकि आप लोग जानते हैं, इसलिए आप रैंक की बात कर रहे हैं. और मैंने अभी तक आपको नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए. भैया मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक रैंक नहीं बोला, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ. तो रैंक अभी हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे रैंक के बारे में. आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे रैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग जानते हैं. इसीलिए मैंने बोला कि ये चीजें मैं फास्ट करूंगा बहुत. क्या? यस सर. तो हम देख रहे हैं ये क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं है. रैंक आपने बीएससी क्लास में पढ़ा, अभी मैं आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यस सर. Is it okay? Yes, sir. Okay. Shall I move ahead? So मान लेते हैं ये this equation is 2x plus y equal to 7. This is the 2x plus y equal to 7, and 2x plus y equal to 3 is
this equation. This line, okay. So these two lines are parallel. These two lines are parallel. They will never meet. Therefore, there does not exist any solution of this system because they represent two parallel lines. Geometrically, these two equations represent two parallel lines. Okay. Let's see another example. Two x plus y equal to 3 and 4x plus 2y equal to 6. What can you say about solution set of this system? So what you will see here, these two equation represents the same line. ये बहुत ही गंदा बना रहा हूँ मैं, sorry. Okay, two equations represent the same line. So this is first equation and say so this means there are infinitely many solutions. So there exists not just infinitely, there are uncountably infinite. So have you seen something called countable and uncountable set? Yes, sir, I've seen. Okay, there are uncountably infinite. Why? So do you see why did I write uncountably infinite? Yes, sir, there exist infinitely many solutions. See, there are two kind of infinity. So one is called countably infinite and other is called uncountably infinite. There may exist others, but I'm focusing only these two, countably infinite and uncountably infinite. So do you see why did I write? Both I of didn't write countably infinite. I wrote uncountably infinite. Do you see why? आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ? कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही. राहुल आपने कुछ बोला? हाँ बोलिए. आशीष आप कुछ बोल रहे हैं शायद. हेलो आशीष, वॉइस क्लियर नहीं. यस, वॉइस वॉइस क्लियर. क्लियर. आप धीरे धीरे बोलिए. धीरे धीरे बोलिए, शायद समझ में आएगा. काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट को क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन है. हेलो. ओके, इसको मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा. ये अभी क्लियर नहीं करूंगा. ये मैं एक अलग से क्लास कभी सैटरडे संडे में लेंगे, तब क्लियर करते हैं. अभी समझिए कि काउंटेबली इनफाइनाइट छोटा है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बड़ा है. ठीक है? यस सर, यस सर. हाँ, अभी इसको ऐसे अभी इसको ऐसे समझिए, काउंटेबली इनफाइनाइट इंटीजर्स है. ठीक है? यस सर. और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. ठीक?
Yes, अभी केवल इतना sir. समझिए, एक्सक्यूज मी ऐसे I'll- समझिए। हाँ सर ये रिपीट कर दीजिए बोलिए। जो भी आपने सब क्या बोला क्या अनकाउंटेबली। सर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट रियल नंबर और सर वो मैंने ये बोला अभी आप, मैं इसके लिए अलग से क्लास नहीं लूंगा क्योंकि ये 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 इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो ये क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को मैं रिकॉल करने के लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट को आप सेट ऑफ इंटीजर्स से देख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एंड यस सर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट को आप सेट ऑफ रियल नंबर से देख सकते हैं। और एनी ओपन इंटरवल और एनी क्लोज्ड इंटरवल इन रियल नंबर नॉन डिजेनरेट ओपन सेट और क्लोज्ड सेट, ओके, of Excuse real me, number, sir. those are countable. हाँ अर्पित, Can I put my opinion? हाँ Sir. हाँ बोलिए। Accountability. Sir, maybe it is right. I don't know, but I want to put my opinion. Sir, जैसे कि as we all know सर, दो नंबर लाइन पे दो नंबर्स के बीच इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं सर, रेशनल इरेशनल्स। और जैसे पूरी की पूरी और रियल लाइन अगर ले लें तो वहाँ पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। बट सर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, जैसे सपोज 1 और 2 के बीच इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे रेशनल इरेशनल्स हो सकते हैं। बट हम 1 से 2 ये काउंट कर सकते हैं, उनके लिमिट्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 इसी तरीके से 3। और हम ये जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, फिर भी हम 1 2 ऐसे कर सकते हैं, मतलब मींस इंटीजर पे पहुंच सकते हैं। और सर नंबर लाइंस पे हैं जहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और रेशनल इरेशनल, और वो गिने क्योंकि उनकी वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, उनकी लिमिट्स नहीं है, तो उसे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट कह सकते हैं। और जो दो नंबर्स के बीच में जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं उनको सर हम काउंटेबली इनफाइनाइट कह सकते हैं। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। अर्पित आप थोड़ा सा इसको और बेहतर कर सकते हैं। आप कहेंगे पहले इंटीजर जो है सेट ऑफ इंटीजर, ये हम मानेंगे एक कोई सेट काउंटेबल होगा अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ एक 1-1 करस्पॉन्डेंस देता हो। इसका मतलब जी। एक सेट ए काउंटेबल होगा अगर काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो लेट Yes, मी sir. से काउंटेबल इनफाइनाइट होगी। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल होगा बहुत इजीली। अगर कोई सेट काउंटेबल इनफाइनाइट है, इसका मतलब एक हमारे पास बाइजेक्टिव मैप 1-1 और N2 मैप एग्जिस्ट करता है सेट ए से नेचुरल नंबर्स के बीच में, ठीक है। Yes, sir. This is the basic definition. हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि सेट काउंटेबल है। अगर ऐसा नहीं होता वी से सेट इज अनकाउंटेबल, करेक्ट। Yes, sir. So Yes. as you correctly said that integers are countable because there is a 1-1 correspondence between integers and natural numbers. Although you see that natural numbers are, if you count, means if you see them for a layman or for a mathematician as well, so natural numbers are a proper subset of integers, correct? Natural numbers are proper subset of integers. Yes. ठीक है, even though there is a bijective map, ऐसा होने के बावजूद भी वहां पर एक बाइजेक्टिव मैप है। Yes. Okay, in fact rational numbers are also countable. So this is other story. So okay, let us Thank you, sir. focus here only. So I said this is uncountably infinite because if you see the solution will be this line, okay, any point in this line will be a solution, correct?
and I can or you can make or construct a bijective map from this set, this line to R, and you know R is uncountable set, therefore this line will be uncountable, therefore this solution set will be uncountable. Correct? Any doubt? Okay, if there is no doubt, then I'll move ahead. Okay, now let's look an example in example where we consider a system of two equations in three variables. System of two equations in three variables. So let's take 2x plus y plus 2z equal to 3, x minus 9y plus 2z equal to minus 8. So if you solve this, you will get x, y, z equal to 1, 1, 0 is a solution. So if you see, if you compare, here I wrote this is the solution. Here I am writing this is a solution. Okay? This means there are other solutions as well. And let's see, and let's recall three-dimensional coordinate geometry that you first learned in, I think, 11th class, if I am not wrong. आपने 3D कब पढ़ी सबसे पहले? Yes, sir. Hello? In 11th standard. Yes, sir. Sir, in 11th class. 11th standard. ठीक है? So you know this first equation. So this equation, and say this is second. Can you recall what do these equations look like in R3 or in three-dimensional space? Yes, sir. What do they represent? Yes. क्या बोले? आशीष क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या है? Sir, Let's focus. Simply an equation of line. Let's focus on this. What does it represent? I think it's Ashish, it's a plane. It's yes, a sir. plane. Yes, sir. Plane means, what do you mean by plane? Plane means just like three-dimensional feature. Three A dimensional plane तो three is a dimensional. collection of all those lines. So कोई भी plane वो सेट है जिस पर एक लाइन जो होती है वो सारी के सारे लाइन पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है सर, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल प्लेन का बोला जाता है. Okay. So this means this is a two-dimensional thing. Correct? Arpit, is it okay? यस सर. नॉट क्या सर, ये यहाँ two पे dimensional? सर जेड एक्सिस भी है सर, तो 2 डायमेंशनल नहीं सर, 3 डायमेंशनल है. Okay. So आप लोगों से मैं कंबाइनिंग हेलो सर, ये दोनों जो केवल इसके इक्वेशंस बारे में हैं पूछ प्लेन की, ये दोनों कंबाइंड तो- होकर के एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी एक की बात कर रहा हूँ. पहला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लेन का इक्वेशन है सर. ओके, बहुत बढ़िया. एक प्लेन का इक्वेशन है, बहुत बढ़िया. एंड सेकंड इज आल्सो ए प्लेन. करेक्ट? यस सर. यस सर. सेकंड इज आल्सो ए प्लेन. सो अगर R3 में दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है,
सो क्या क्या सिचुएशन बनेंगी? My drawing is not that good. Let's see. Okay, क्या मैं अच्छा बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ? तो मैं थोड़ा इजी सा बनाऊंगा पहले, तो जिससे कि मेरा फायदा हो जाएगा कुछ कुछ. So say this is a plane. And there may be another plane. So I'm not drawing these two planes, okay? I'm drawing an arbitrary. So say these two planes, they do not intersect, means they are parallel to each other. So this is one condition. These are parallel planes. Then there are planes like this. So they will intersect and intersection will be a line. Correct? So if two plane intersect, हाँ हेलो, बोलिए बोलिए. Okay, if they intersect like this, then the intersection will be a line. Okay? Any doubt? So this means in above example, these two planes intersect and this is a solution. There must be other solution as well. So say, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? Please complete yourself. क्या बोल रहे हैं आप? सर कोई कुछ नहीं बोल रहा है. कोई तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है. कुछ तो बोला. सर टू हो रहा है कुछ. अच्छा टू हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, ये आपके बात समझ में आई? दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते तो दो चीजें होंगी. या तो प्लेन एक लाइन में इंटरसेक्ट करेगा या क्या होगा, ये प्लेन है और यही सेम प्लेन दूसरा प्लेन है. लाइक से एक्स, say these two planes equal to 0 and 2x equal to 0. This is a plane and this is same plane, 2x equal to 0. Okay? So these two planes will represent. Sir, to intersect or to coincide, two planes should be same or different भी हो सकते हैं. हाँ, coincide करने पर जब ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है x equal to 0 and 2x equal to 0. This is an example where these two equations represent the same line, the same plane. Means they will coincide. Okay? Okay, sir. And Sir, in this case, they will intersect and they will intersect. The intersection will be a line. Okay? hello. हाँ बोलिए, Sir, कोई बोल रहे हैं, बोलिए. I have put a chat box. Please take it. ओके, Hello. कहाँ पर? हाँ बोलिए बोलिए, आशीष बोलिए. Sir, I am saying that chat box. Please take it. Chat box.
Sir, when we play with two variables, then we are searching for intersection of points. In three variables, searching for intersection of three planes means aligned. Intersection of three planes. What is Ashish? So Yes, sir. intersection of three planes. Intersection of three planes. Three planes. So in R3, if you take three planes, there may be like this. The situation may be like this. It may be a point or they may not intersect. Okay. Okay, so three dimensional thing को कैसे बनाएं? It's difficult for me to draw. I don't know how would I draw this. So say Sir, this is a plane, this one, and here is another plane. So these two will intersect at a line, but then there is another plane. It intersect with these two, but there is no intersection if we take these three together. Okay. yes, sir. Correct? Think about. Yes, sir. I can think about the three standard planes. It may be a point, but my question is what about the geometrical interpretation of And variable. Okay. Yeah, we will. Yeah, we will. Yeah. So in this course, we will see such kind of things. You will get to know what they will look like. Okay. Yes, it's my Correct. problem of BSc level. Yes, sir. Okay, that's good. We will tackle this problem. Okay, since it's 12:59 already, tomorrow we will take your, so we will discuss about it. Okay. Thank you. Okay, so drop your attendance, and you were asking about book. So there is a book by Hoffman and Kunz, Linear Algebra. You may buy that book, and there is one beautiful book by Kumresan. It's called Linear Algebra, a Geometric Approach. You may also buy that book. You may see that. And I have sent one book in your WhatsApp group. The title is Linear Algebra Done Right by Exler. Okay. Yes, sir. Okay. See you tomorrow. So use the setting tomorrow. आशीष slowly Hello. slowly. हाँ बोलिए बोलिए. I'm आशीष आशीष आप टाइप कर आशीष प्लीज टाइप आशीष प्लीज टाइप एट चैट बॉक्स. Okay, sir. चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. Yeah, it's okay. It's okay.